Hello students, today we will continue our chapter which is going on acids, bases and salts. Last video में हमने देखे थे इसके topic is like indicators, what are acids, reactions that acids perform. आज हमारा acids का एक और topic रहता है which is what are strong acids and weak acids. So we'll start with strong acids. Strong acids are the acids which are completely ionized in the water and produces H positive ions. This is strong acids. For example, we have HCl, hydrochloric acid, we have HNO3, nitric acid. So what are strong acids? Strong acids are the acids, वो acids होते हैं जो completely ionized होते हैं water में and they produce H positive ions. We will see with the help of example. For example, HCl acid है. For example, जब ये water में mix करते हैं ये ionize होता है into H positive and Cl negative ions. This is called ionization. And strong acid मतलब strong acid for example अगर starting में हम लेते हैं इसका X amount, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा. आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन के बाद इसका कितना अमाउंट बचेगा, दैट विल बी 0. इसका बनेगा x, इसका x मीन्स ये कंप्लीट आयोनाइज हो गया फ्रॉम x टू 0 इंटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी इट गेट्स कम्प्लीटली आयोनाइज्ड. इसका कोई भी पार्ट आयोनाइज के बाद अनआयोनाइज्ड नहीं रहता है. That is acids which are completely ionized and produce H positive ions, which is this. And this is strong acids. We have another example like HNO3. They get ionized into H positive plus NO3 negative ions, the same way as Cl does. Now second type of acid, weak acids. An acid which is partially ionized and produces small amount of H positive ions is called weak acids. For example, we have CH3COOH in an acetic acid, or H2CO3 which is carbonic acid. These are both weak acids. यानी क्या है, व्हाट इज़ वीक एसिड? वीक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, यानी कम्प्लीटली वो आयोनाइज नहीं होते हैं. दे डोंट ब्रेक इनटू आयंस फुल्ली एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस. दिस इज़ वीक एसिड. अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे. फॉर एग्जांपल वी विल टेक दिस एसिटिक एसिड CH3COOH. जब ये आयोनाइज होगा इट विल गेट आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव plus CH3CO negative ions. ठीक, this is ionization of this acid. इनिशियली अगर हमने इसका X अमाउंट लिया, इसका होगा 0, इसका भी होगा 0. आफ्टर आयोनाइजेशन जब ये फुली आयोनाइज होगा,
मतलब फुल टाइम इसको हम देंगे आयोनाइज के लिए। अब इसके बाद भी इसका कुछ अमाउंट रहेगा, से फॉर एग्जांपल x माइनस वाई, इसका कितना बनेगा फिर y, इसका भी y, यानी आफ्टर आयोनाइजेशन जो ये एसिड है हमने लिया था यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इसका कुछ अमाउंट रह गया, यानी वो आयोनाइज नहीं हुआ, और H पॉजिटिव यहाँ पे कितने हमें प्रोड्यूस हो गए, y अमाउंट विच इज़ लेस देन x, वहाँ पे हमें इक्वल टू x मिल गया था स्ट्रॉन्ग एसिड में। यहाँ पे y अमाउंट y इज़ लेस देन x, यानी जितना हमने एसिड लिया था उससे कम ही H पॉजिटिव हमें मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज़ वीक एसिड, ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं हुआ यहाँ पे। Hence, acid which was partially ionized, which is partially ionized and produce small amount of H positive ions. This is weak acid. Now our next topic is bases. Main topic इसका इस chapter का bases. What are bases? Bases are substances which are bitter in taste. They turn red litmus into blue and give hydroxide यानी OH negative ions in aqueous solution. What are bases? Bases वो substances होते हैं जो bitter in taste होते हैं, यानी कड़वे टेस्ट में वो कड़वे होते हैं। रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस, एंड दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी अपॉन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे एसिड देते थे H पॉजिटिव आयन्स, ये देते हैं OH नेगेटिव आयन्स। दीज आर बेसिस। हम इसको और डिटेल में आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ बेसिस। Bases are of two types, which is water soluble bases and water insoluble bases. Water soluble bases, these are those bases which are not soluble in water, whereas water insoluble bases, these are soluble in water. वाटर दो वो बेसिस जो वाटर में सल्यूबलाइज नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं यहाँ पे सल्यूबल, यहाँ पे इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल बेसिस आर दोज बेसिस विच आर नॉट, जो वाटर में सल्यूबल नहीं होते, और जो सल्यूबल होते हैं दे आर वाटर सल्यूबल बेसिस। और जो वाटर सल्यूबल बेसिस होती है दे आर ऑल्सो कॉल्ड alkalis. Important point है, alkalis are those bases which are soluble in water. Water soluble bases are called alkalis. अब alkalis कौन से टाइप के बेसिस होते हैं, तो पता है दे आर वाटर soluble, बट कौन से बेसिस? alkalis are those bases which are made with alkali or alkaline earth metals। यानी जो पीरियोडिक टेबल जैसे ऐसे कुछ होता है, पीरियोडिक टेबल जो इस
ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं अल्कलाइन और अल्कली अर्थ मेटल्स, उनके साथ जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दोज आर द बेसिस which are called as alkalis. For example, सोडियम इस ब्लॉक का मेटल है, पोटेशियम है। इनके अगर हम देखेंगे, इनके जो बेसिस बनेंगे दैट इज़ NaOH, KOH, दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इन्हीं के जो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं यानी इनके जो बेसिस, दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेसिस देन these metals or these metals, these are non-metals and these metals. इनके कंपैरिजन में इनके हाइड्रोक्साइड दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज alkalis because they are water soluble. जैसे और एक एग्जांपल देखेंगे हम, we have calcium hydroxide as alkali और magnesium hydroxide. These are all alkalis or strong bases which are made with these elements. Now we have chemical properties of bases. First type of reaction जो chemical bases हम पढ़ेंगे, that is reaction with metals. Base or alkali plus metal gives respective salt plus hydrogen. It is the same way that acids react with metals, they also produce salt and hydrogen. Definition: bases react with metal to produce salt and hydrogen gas. बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट एंड हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल, अगर हम बेस लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है या अल्कली है बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, एक्वस प्लस अल्मोनियम जो कि एक मेटल है इन वाटर, we will get NaAlO2 in aqueous plus 3 times हाइड्रोजन. यानी जब अल्कली या बेस एक मेटल के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. सॉल्ट कौन सा बना यहाँ पे हमें? सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट इज़ द सॉल्ट जो फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ NaOH and sodium hydroxide with aluminum in water. This is the reaction of bases with metals. Next type of reaction with bases, that is the reaction with oxides of non-metals. फर्स्ट पहले हम देखेंगे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स यानी फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स. इनके ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. इनकी रिएक्शन विद बेसिस,
वो हमें पढ़ना है। फर्स्ट वी विल सी इनका नेचर कैसा होता है, जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तभी हम पढ़ सकते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली एसिडिक, फॉर एग्जांपल CO2 दिस इज एसिडिक, SO2 दिस इज एसिडिक। और जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, फॉर एग्जांपल NaO दिस इज ऑक्साइड of a metal, this is basic, this is oxide of non-metal, this is acidic। आपको याद रखना है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ठीक, now we will see this type of reaction, base plus non metal oxide gives salt plus water। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे हमने देखे एसिड होता है, वीकली एसिडिक होता है लेकिन एसिडिक होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज लाइक बेस प्लस एसिड। एसिड बेस रिएक्शन जैसे बन गई, गिव सॉल्ट प्लस वाटर। या और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देखेंगे, वो हम अलग देखेंगे थोड़ा डिटेल में। फिलहाल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड को एज एसिड, बट वीकली एसिडिक लेकिन एसिडिक। अब हम इसकी डेफिनेशन में इसको लिखेंगे, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स और acidic in nature, for example carbon dioxide। Therefore when base react with non-metal oxide, both base and acid neutralize each other, resulting in the formation of respective salt and water। For example बेस अगर हम लेंगे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज a strong base which is also alkali because it is metallic hydroxide, plus CO2 as non-metal oxide, carbon dioxide gives COCO3, calcium carbonate plus water। यहाँ पे बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर गिव्स सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। यानी व्हेन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स विच और जो एसिडिक इन नेचर होते हैं दे न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। Now next type of reaction we will see is neutralization reaction, very important type of reaction। जैसा मैंने अभी बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज एसिड एंड बेस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कहते हैं, हेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस gives salt plus water।
In this reaction, acid neutralizes base and form respective salt and water. For example, एसिड अगर हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे हमें NaCl salt in aqueous form plus water. ठीक, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और रिएक्शन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये डिसोसिएट या आयोनाइज होगी इनटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. यानी OH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी वाटर में आयोनाइज होगा इनटू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. This HCl reacts with Na and H reacts with OH and Na positive plus Cl negative, they give NaCl negative, NaCl, Na salt, and H positive with OH negative, they neutralized form water. This is how neutralization reaction proceeds. In the same way, अगर हम दूसरे एग्जांपल देखेंगे, reaction of HCl plus calcium hydroxide, we get CaCl2. यहाँ पे जो CaCl2 salt है plus water. Acid, calcium hydroxide base. So neutralization reaction is the reaction of acid plus base. इसमें होता क्या है? both neutralize each other and product में बनते हैं salt plus water. For example, HCl, NaOH, both are strong acid and strong base. They react to form NaCl and H2O. NaCl here is salt. This is the neutralization reaction. Now we will see next type of reaction. A reaction of metal oxides with acids. जैसा मैंने अभी बोला, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर एसिडिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स दे आर लाइक मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, this is metal oxide, this is basic in nature. In general, metal oxides are basic in nature, and this is for example non-metal oxide, this is acidic in nature. ये भी आपको याद रखना है, non-metals are basic in nature. यानी this is a type of reaction of base with acids. जैसे हमने ऊपर देखा, base यानी with acids. Metal oxides are basic in nature, उनकी reaction with acids. Metal oxides यानी bases plus acids. This is again the type of neutralization reaction because base plus acid. लेकिन यहाँ पे base weak base है, gives corresponding salt and water. यानी metal oxides are basic in nature, therefore when they react with acids, they neutralize each other. For example,
मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक ऑक्साइड है, रिएक्शन विद एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में क्या बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, which is base plus water. This is the reaction of metal oxides with base, metal oxides with acids, यानी metal oxide in turns are bases, यानी bases with acids, यानी weak bases with acids. They form salt and water, corresponding salt and water. So students, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक बेसिस, pH स्केल एंड सो ऑन. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक्स.